हेलो 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 हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी। कैसे हो आप सब? हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी। वेलकम बैक टू द लाइव स्ट्रीम। वेलकम बैक टू द लाइव स्ट्रीम। कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? हेलो हेलो, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू द लाइव स्ट्रीम। Hey, hi Solo Reflex. Welcome to live stream. Welcome to live stream. Hi Solo Reflex. Welcome to live stream. Hi everyone. Welcome back to the YouTube channel Classes with me. कैसे हो आप सब? ओके, वी हैव वन मैसेज फ्रॉम सोलो रिफ्लेक्स। उस दिन मेरा इंटरनेट फिनिश हो गया था। आप डोमेन के बारे में कुछ पूछ रहे थे ना, आपने लॉगिन किया था, मैंने उतना ही देखा था। आपको कैसा लगा वेब ऐप? भाई बहुत सही है भाई, बहुत क्लीन है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। उतना हौच पौच नहीं है, सिंपल है, मतलब बहुत मिनिमलिस्ट है और सिंपल है, जो कि एक्चुअली इज अ गुड थिंग। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हाँ आपको कुछ चीज़ या कुछ फीचर फाइंड आउट करना हो तो यू हैव टू लाइक गो टू दिस थिंग्स, या वो ऐसा नहीं है। डायरेक्टली सब कुछ जो भी है, जो भी फीचर है, जो सब कुछ सामने है, वो बेस्ट चीज़ लगा सोलो रिफ्लेक्स आपका। ठीक है, वो मेरे को अच्छा लगा।
ऑन स्पॉट है सब कुछ और सब कुछ अच्छा है, वो मेरे को अच्छा लगा। ऑन स्पॉट सब कुछ है, सो दैट्स द बेस्ट थिंग, जो कि सही चीज़ है। तो एनी वन एनी डाउट इन द लाइव स्ट्रीम, पूछ सकते हो आप लोग। एनीबडी हैव एनी डाउट इन द लाइव स्ट्रीम? Anybody have any doubt in the live stream? Do we have any query right now? Let me refresh. Let me refresh once. Okay. Hi, work with Paparazzi. Welcome to live stream. Welcome to live stream. Hi, you ever thought about GSOC? GSOC शायद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए काम आता है क्या? Is it that? मतलब I have never heard about it like that much. Whatever I have heard about कि it is an like software development tool है, ऐसा कुछ है. Is it like that? मतलब I don't have that much idea about it. Not having like much more idea about it, but one thing I know, it is a kind of software development tool. Is it that? Is it that? सोलो रिफ्लेक्स एंड आपने मैंने जो CSV का स्टेटमेंट दिया था वो प्रोसेस करके देखा कि नहीं? वो मैं कुछ एक्चुअली प्रोसेस नहीं किया, जस्ट लॉग इन करके देखा था कि उसमें क्या अपलोड करना है क्या नहीं, बस दैट मच। एंड आप बताओ उसमें क्या चीज़ डालनी चाहिए, क्या इंप्रूव करना चाहिए आपके व्यू से? भाई मेरे व्यू से मैं तो बोलूँ, भाई बहुत सिंपल वेबसाइट है और बहुत सही है, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत सही है। मतलब जितना सिंपल रखोगे चीज़ को उतना अच्छा रहेगा, तो वो मुझे अच्छा लगा। बाकी मेरे को तो क्लीन लगा, कलर्स आर टू द पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग इज गुड टू गो, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। बाकी इम्प्रूवमेंट के लिए लेट्स सी क्या क्या हो सकता है। आई डोंट थिंक और कुछ चाहिए, बट लेट्स सी। ओके, गूगल समर ऑफ कोड इंटर्नशिप प्रोवाइडेड बाय गूगल, ना भाई आइडिया नहीं है भाई इसके बारे में, नो आइडिया ब्रो, नो आइडिया ब्रो, नॉट अबाउट दैट, नो आइडिया अबाउट इट। रखोगे चीज को उतना अच्छा रहेगा, तो मुझे अच्छा लगा। बाकी मेरे को तो क्लीन लगा, कलर्स ईच एंड एवरीथिंग इज गुड टू गो, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। बाकी इम्प्रूवमेंट के लिए लेट्स सी क्या क्या हो सकता है। आई डोंट थिंक और कुछ चाहिए, बट लेट्स सी। Mic cracking. Right now, is it okay? Check once. Check once. Is it okay right now? Check once. Check once अभी बोलो सही है कि नहीं? Is it okay right now?
Yep, it is good now. Chalo, thank you, bhai. Thank you for that. So anybody have any doubt, they can ask their doubts in the live stream. So anybody have any doubt? किसी को कुछ भी डाउट हो लाइव स्ट्रीम में आप लोग पूछ सकते हो इधर. Anybody have any doubt in the live stream, they can ask your doubts. Soon we will start our practice session. Anybody have any doubts? Anybody have any doubt, they can ask their doubts in the live stream. Hey, hi Lucifer, welcome to live stream. So how was the project like? Have you gone through the project? How was it?
How was the project? Like, is it good, or do we have to add something new in that? Yes, nice, but I haven't completed it. No worry, no worry. Take your time. Take your time for that. No worries for that. Take your time. No worries. Take your time. And if you have any doubt, you can ask me directly here or in the mail, anywhere it is. Like you got the like file na Google Drive wala file. Have you received that? Actually, I pasted in the. I've given the link in that. What we say in the YouTube post. That's why I've sent you a mail as well. I hope you have went through the mail. I hope you have went through the Google Drive. This what we say. Uh, Google Drive का link in the YouTube post. Actually, I'm taking my all device backup now and formatting everything because my storage is full, mobile storage and laptop storage also. No worries, no worries. Take your time. No worries for that. No need to hurry about. Just take your time. ठीक है. I seen your mail also. Yes. चलो ठीक है ठीक है. चलो. That's the only thing I need to ask because I have just मतलब kept the link earlier in the this description box. Then I thought कि I should paste the link in the मतलब members only YouTube post. That's why because through that link anybody can have access. So I have updated the thing and sent a mail so that people get मतलब informed about it. चलो ठीक है, you got the mail, you read it. That's a good thing. Like you are informed, so that's a good thing. And on December 1 you will get the English version as well. ठीक है? December 1. ठीक? You will get the English version as well for that.
चलो बढ़िया. ओके. Everything done, I hope. Let me check once. Okay. So just a minute. I hope everything is good to go. Mm. So I have a question as well in this. Do we have anything additional to be checked? It's 6 o'clock right now. Let's check once. Mm. Do we have anything else to be checked? Nothing here, nothing here as well. Let's see.
Let me just check once. Chalo, let's start the assignment questions and all. Hey, hi, welcome to live stream. ब्रो अभी इंटरव्यू ख़त्म हुआ है and उन्होंने सीक्वल के 2 सवाल पूछे और दोनों आई फेल्ट रियली हार्ड टू सॉल्व. आई हैवेंट सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन लीड कोड. फ्रेशर विल दे कॉल बैक? नो आइडिया ब्रो, नो आइडिया. लेट्स सी. लाइक इज इट अ स्टार्टअप कंपनी है क्या? स्टार्टअप कंपनी है तो दे might take a chance, might take a chance, but if it is a something like good quality MNC, then chances are very low that they will call you. If it is a startup company, yeah, might be chances are there, but if it is an MNC, then chances are close to no that they will make a call. Means if you have solved it, then it is good. Like, have you solved that question? Like, have you done anything? Okay, they were focusing more on approach mid level. Like, have you solved that question? मतलब आउटपुट आया नहीं आया चलेगा, बट क्या आपने कुछ लाइक क्वेरीज लिखा उसके बारे में? लाइक अगर आप कुछ क्वेरीज भी लिखे होगे तो भी ठीक है. अगर वो लोग अप्रोच देख रहे हैं तो चलेगा. मे बी दे माइट कॉल यू बिकॉज उनको आंसर से मतलब नहीं है. दे वांट टू सी योर थॉट प्रोसेस, व्हाट आई बिलीव. जैसे कि आपने बोला है, इट्स नॉट लाइक दैट कि I am saying because you have told like they were focusing on approach, and if they are focusing on approach, and if you have anyhow given a try for that, then yeah, chances are there like they might call you. Yes, half. Let's see, let's see. Like, is it a startup company? क्या startup company था क्या वो? Is it a startup company? And if you want, you can share the questions here as well. If you want, it is depending on the privacy as well, because company's question, that's why I'm saying. Mid-level startup, then there might be a chance they might give you a call, because you told like you have solved half of it, so there might be a chance कि वो आपको call कर सकते हैं. So just hope for the best. That's what I'm trying to say. Just hope for the best. That's it.
ठीक है। Okay, we have one more query. I think I asked for too much CTC. That's why they did this 10 LPA. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. It is not like that. अगर उनको CTC से इशू होता तो they might not have called you. Simple सा बात है. Because they also don't want to waste their time, and why they will waste your time if they don't want to give you that much CTC. है कि नहीं? Simple. अगर CTC है इनके पास, that means like they might to hire some or the other people out there. ठीक है. So that's what I'm trying to say. It is nothing like कि CTC के ऊपर है. अगर CTC में कुछ इशू होता तो या we can say कि चलो they might not have given you a call or something. But if there is no issue in CTC and you get a call, that means yeah, they have no issue in that. Let me tell you. So let's start these things. Let's start. But बट नाउ आई फील लाइक आई डोंट नो सीक्वल. अगर आप क्वेश्चन बोल सकते हो तो आई माइट हेल्प यू आउट कि लाइक वाज इट काइंड ऑफ ठीक है टेल एल पी ए के लेवल का क्वेश्चन था कि नहीं. आई मीन टू से दैट इफ यू कैन गिव द क्वेश्चन और इफ यू रिमेंबर द क्वेश्चन यू कैन ईमेल मी. आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट. ठीक है. यू कैन ईमेल मी like what kind of question was that and all, then I can help you out in that. If I get, I will. Yeah, sure, by sure, sure. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. No worries for that. Let's wait. Let's hope for the best. Think positive. Call आ गया तो ठीक है, नहीं तो no worries. There are other companies as well. They are ready to hire people. ठीक है. At least you are getting calls. That means कि भाई your CV is proper. Your projects are good. At least you are getting a call. And that too you have demanded 10 LPA, and then also they are ready to give a means ready for the interview, that too for freshers. So that's a good thing. मैं तो बोल रहा हूँ market is good right now, I would say.
So should we start the live stream? Let's start. It's enough time. No. Yeah. Let's start the live stream. Hey, hi Vishal, welcome to live stream. वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। क्या आज भी नहीं बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, आज से वी विल स्टार्ट दिस थिंग। अभी हो गया, इशू क्लियर आउट हो गया, सो नो नीड टू वरी अबाउट। ठीक है। सो एनीबडी, किसी को कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो, बाय दैट टाइम असाइनमेंट्स वगैरह सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन का है, ठीक है। चलो, एनीबडी हैव एनी डाउट्स इन असाइनमेंट 7? वी विल क्लियर दैट डाउट फर्स्ट, या तो हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है। We can start from here. So I hope it is visible to you all. We have one more query. Now I am trying to cope up. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, नो इशू, नो इशू। एटलीस्ट यू नो कि यू, मतलब रॉकी, इतना तो मुझे, लाइक आई कैन से यू वन थिंग, you know about your knowledge right now, like you know how much knowledge you have in SQL, so that's a good thing, ठीक है। And that's the best part of interview, let me tell you that, ठीक है। Best thing is, at least for 10 LPA, for 10 LPA CTC that you have asked, they have done two things, like they have given you a chance. That's the first best thing, ठीक है। That too for a fresher, even though for a fresher I have to write that, because that's really good thing for a fresher, if they're asking for like giving a examination, मतलब written examination or tech examination, that's a good thing. And one more best thing which I am trying to say, this is the first thing, and one more best thing, at least you were able to do, like you are able to do at least, I would say, half of the question, so that's a good thing, that's a good thing। मतलब हाफ क्वेश्चन भी अगर आप कर पा रहे हो, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, Rocky, let me tell you one thing. If you would have been given a time, given a good ample amount of time, I would say, if good amount of time would been given, good amount of time, then you would have been able to solve the two question. ठीक है, that was the interview scenario. So interview scenario that time, situation is also different, ठीक है। That time situation is like this, ठीक है। Situation is different at that time during the interview. If the same question I would have given you on a free basis, like I would have given you, like, do this question in one day, you would have been able to solve it, let me tell you. I have believe on that, let me tell you that. I have that much faith that you would have been able to solve
this two question if this was not a interview scenario. ठीक है, so no need to worry about, no need to be sad. At least मतलब I am really happy like you got a call from this company, like whatever company you told, it is mid-level startup. That's not the thing, let me tell you. But for 10 lpa ctc, like bro, come on, for fresher, that to 10 lpa ctc you got a call, that's really a good thing, I would say. Be happy for that. At least your cv is up to the mark, your communication is good, because they won't give you directly कि हाँ चलो 10 LPA मांग लिया, उसको क्वेश्चन दे दो. इट इज नथिंग लाइक दैट. दे माइट हैव कनेक्टेड टू यू, दे मतलब दे माइट हैव कम्युनिकेटेड टू यू. ठीक. सो दैट्स द थिंग. तो आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, व्हाट आई बिलीव. Communication would be, I would say, would be better, because without communication they might not have thought of, at least thought of hiring you. They've thought of hiring you with the 10 lpa, that too for a fresher. That's really a good thing. You should be happy for that, brother. You really should be happy for that, because people are not getting called. Like even I start searching for job right now as well. It will take a good amount of time, and I don't know how many rejections I will get, believe me. But still, for a fresher, you're getting 10 npa, appreciable, man. Really, I'm happy for that. Vishal looking. Acha, thank you, Vishal. Thanks, bhai. Thanks. Okay, we have one more query. They give 5-10 minute each. 5-10 minute each अगर है तो फिर it might be a tricky question. तो हाँ, tricky question होगा for sure. It might be a tricky question, not lengthy. Lengthy नहीं होगा, मे बी tricky question होगा. ठीक है, it might not be a lengthy question for sure. Surely वो tricky question ही रहेगा, what I can believe. 5-10 minutes means tricky question, and tricky questions are mainly based on basics of anything, like either you take SQL or any programming language you can take of any domain. ठीक है. ठीक है. So because 5-10 minutes is what I believe about whatever scenario I have faced in my life, मतलब corporate life plus freelance scenario, I can believe it might be a tricky question. ठीक है. And tricky question means only basics of anything like SQL, any Python programming language, or anything, any domain you go, web development or software development. If they're asking for basics question, that means, I mean, if they're asking for tricky questions, then it might be basics. Okay, we have one more query. Yes, it was tricky. Yeah, I know, it is. Scenarios like this, like if some interviewer or any company is asking you for 5 to 10 minutes का time frame, then it is obviously a tricky question. ठीक है, for sure it is. I told you on starting only, it might be a tricky question, not might be, but it is sure it's a tricky question. And you have also मतलब told here as well कि वो tricky question है करके. So no worries for that. At least you are able to solve it, you are able to understand the question. That's a big thing. तो और किसी को कुछ डाउट पूछना हो तो, एनीबॉडी.
तो ठीक है, let's by that time let's move to this assignments. Let's practice some questions from the assignment and also clear out some doubts. Questions we have: write a query to print out the premium customer from order table. Okay, premium customers. They have asked to print out premium customers. ठीक है. So, who are premium customers actually? So, premium customers are those who have done more orders than the average number of order per customer. Okay. Suppose there are 10 customers, suppose 10 customers, and their average is suppose 5, 4, anything. Let's take 5. 5 is the average order per customer. ठीक है. So, who are premium customer? Those customer who have done more orders than this 5. Orders greater than 5 are called premium customers. ठीक है. This is what it has given. Premium customers are those who have done more orders than the average number of orders per customer. Okay, we have one more query. Thanks, brother. Yeah, welcome, bhai. Welcome, welcome, bhai. And don't be sad. There is not only like it's not the last or the first company. More companies will be there to hire you. So just practice on a daily basis. Right now, see, right now you have seen the real scenario. ठीक है. Right now you know कि where you stand on the basis of knowledge. ठीक है. So from today onwards, please start practicing on a daily basis and you will get success. Believe me, you will get success. Let me tell you. So just have good amount of practice for data analytics part and success is there. So no worries for that. So okay, so question is premium customers from order table. ठीक है. Premium customers are those who have more orders than the average orders per customer. Okay. So right now, what would be the thought process? Like anybody want to share your thought process for this question? Share your thought process for this question. Anybody wants to share thought process for this question? ठीक है. By that time, let me share my thought process. My thought process is what I will do. I will create a table with 3 columns. ठीक है. First, customer ID or name, anything. ID or name, anything. Customer ID or customer name, anything is good to go. ठीक. Second is I will take the orders for this. Orders for customer name. Orders or sum of orders per customer. ठीक है. Hey, hi Charan, welcome to live stream. Live stream. Hi Charan, welcome to live stream. So what we will do, we will take the sum of orders per customer. This is the second column. Third column, I will add a subquery. ठीक है. I will add a subquery and keep the average
orders for the total number of customers. ठीक है, total customers like how many customers would be there, suppose 10 customers would be there. ठीक है, and their average is 5. So I will make sure the column contains like this 5 in all the cells. ठीक है, here suppose 10, 4, 3, 3, 2, 1. Customer name is A, B, C. Suppose like this. So those customer whose total orders is greater than average orders, that customer name will be highlighted. Simple, I will add the arithmetic operators for this. Sum of orders greater than sum of orders greater than average orders. I will add this arithmetic operator and find the output. Tick. This is my thought process. So anybody have their own thought process, they can write here. Anybody have any thought process? Anything from their side? ठीक है, no worries. You can just write your thought process here in the live stream. We can carry that thought process in our question and we will check the answer as well. ठीक है, so let's jump to the SQL environment, that is our PostgreSQL, and work on that. ठीक, we will see first. Select everything from this and execute it. Once we execute it, we can see that there are lots of columns. Okay, row ID, order date, ship date, customer ID, customer name, segment, country, city, state. Okay, we have customer name here and customer ID here as well, but I need only customer ID. So what I believe is like customer ID from this. ठीक है, simple. Let's take that. And after that, I have written one more thing, that is sum of order per customer. ठीक है, so let's write that first. Sum of hmm, it won't work. Sum of order ID, we will do a count. First we will count the number of orders here. Order count from this group by customer ID. ठीक है, and we will execute this. So we have received all those order counts for the customer ID. So right now, if you know this, the arithmetic operators like what it is there, sum and all, they work in integer only. ठीक है, any of the arithmetic operators you say, it works in integer. So if I would have done sum of order ID, it would show an error. Why I'm saying? Because order ID is nothing but variable character. So variable character is what? Mixture of text plus integers.
ठीक है, so it won't work. It would show an error to us. ठीक है, it would show an error to us, simple. So that's why I have done a count of order IDs for this, and right now from here I will do the sum. And how I will do the sum? I will write with t1 as this. We will write select everything, then sum of order count as total orders from t1. ठीक है, and then we will execute this. Oh, sorry. Here we have to write customer ID, then group by customer ID. And when we execute it, we will find this output. ठीक है, total मतलब customers with the total orders. ठीक है, simple as that. Right now, from this, I will add a subquery. Subquery for what? Subquery for the average number of orders done by total customers. So it is like select average of this order count from T1. ठीक है, as average orders, and let's execute this. When we execute this, we found out this thing. 12.6 was the average orders done by total number of customers, and how many total rows are there? 793. So that means 793 customers are there, and their average orders are what? Average orders are 12.6. ठीक है, simple, or you can say 13. ठीक, right now we will just use the arithmetic operators and find out like total orders greater than average orders, and we will find the output. ठीक है, so we will give no need to give this, we can directly write having sum of orders greater than this. Simple as that, and we will get the output. So in this we have got the output like 18, 16, 17, 13 and all. If you want to see the lowest sum, you can directly do order by total orders ascending. So it is already in ascending, no need to write it. ठीक है, and when you execute it, you find out that 13 is the lowest order, which is this much. 13 is the lowest sum of orders from the table. ठीक है, from the table, from the recent table, I mean to say this one, not overall. From the recent table we can say that 13 is the lowest order from the customer point of view. ठीक है, so in this way we have completed question number 1. And anybody wants to ask any doubt?
they can ask their doubts. ठीक है? Anybody have any doubt in the live stream, they can ask your doubts here. So any doubts? Anybody have any doubts in the live stream? Anybody have any doubts in the live stream, they can ask your doubts right now and we can help them out. So no need to worry about, just ask your doubts related to SQL, related to Python for data analytics. Ask your doubts, I will help you out in this. Anybody have any doubt in the live stream? So anybody have any doubt in the live stream, they can ask your doubts. Any doubt? Anybody have any doubt in the live stream, they can ask your doubts. Anybody have any doubt in the live stream, they can ask your doubts in the live stream, I can help you out. Any doubts related to anything? Anybody have any doubts in the live stream, they can ask your doubts. Okay, so let's move to question number 2 by that time. Okay, in question number 2, what they have asked, they have asked to write a query to find employees whose points are more than and equal to average points of employees in that cashier ID. Okay, suppose there are cashier IDs like that. Let me just suppose cashier ID 1 1 like this, 2 2. So cashier IDs are having number of employees like employee 1, employee 2, employee 3, employee 4 and employee 5. ठीक है, and they have specific points attached to them. ठीक है, जैसे कि 5 5 3 3 2. So what we have to do is like we have to write a query to find employees whose points are more than and equal to average point of employee in that cashier ID.
So in this cashier ID, we have to find the average points. For example, for this, like 5 plus 5 plus 3, like how much it is. Let's find the average. Like 5 plus 5 plus 3 divided by 3. So average is 4. ठीक है, average is 4. And for the second cashier ID, 5 by 2, average is 2.5. ठीक है. So you can ask anything related to this, मतलब कि whoever employee, any employee, ठीक है, any employee who are having their points greater than the average. Example this 5 4 means employee having 5, obviously they are greater than 4. Employee having 5 greater than 4. Employee having 3, no, they are not greater than 4. This is for cashier ID 1. Now let's move to cashier ID 2. We have 3. Is it greater than 2.5? Obviously 3 is good to go. Is 2 greater than 2.5? No. So from this we will get an output. ठीक है. What output we will get? Let's check that out. From this we will get an output that employee 1, employee 2 from cashier ID 1 are in the output because they have their points greater than average points. ठीक है, average points of that particular cashier, for the particular cashier. For second cashier ID, same, points greater than the average point for particular cashier. So like this we have to find the output, and this is my thought process for that. ठीक है. सो ओके, हाय विशाल, हेलो भाई. मेरे तो लग गए. व्हाट हैपेंड विशाल, क्या हो गया? मतलब कहीं जॉब वॉब लग गया क्या? दैट्स अ गुड थिंग देन. इज इट दैट और इज इट समथिंग एल्स? सो ओके, by that time let's jump into our SQL environment and practice this thing. ठीक है, let's jump into the SQL environment and practice this thing. ठीक है. क्वेश्चन 2 क्या होगा? लेट्स सी. आई थिंक एवरीथिंग इज गुड टू गो. हाँ चलो सही है. So what we have, this employee, and what is the table name? Feed. They have asked for cashier ID. So I think cashier ID is in feedback table and cashier table. Let's paste this. Like everything from feedback table and execute it. Okay, we have found out that मतलब cashier ID and employee points are there. ठीक है. So if cashier ID and employee points are there, what thought process I have found out here? This is my thought process. If you want, you can also add your thought process. No worries for that. There are a lot of ways to find out the answer. So there is no correct way or wrong way. There are lots of ways to find out answer. So no need to worry about. Okay. Right now, what we will do, we will uh,
join join the table to find the average. ठीक, let's see in what process. Okay, we have one more table here as well, as I was telling, cashier table. Let's see that what we have in this. In cashier table we have cashier id. ठीक है, in feedback table also we have cashier id. Oops, sorry, we have cashier id. What we will do, first we will find out the average of each cashier id. ठीक है, simple as that. How to find it out? Let's see that. I will write on a dot cashier id equal to b dot cashier id. ठीक है, we are matching both cashier id, and right now when both cashier id are mixed match, I just want the cashier id and the average points. How to do it? Simple, a dot cashier id, then I will write the average of employee points as average points. ठीक है, but here we have an aggregate function, so for the aggregate function we have to use group by. Simple as that. Group by a dot cashier id. Simple, this thing, and execute it. Have we received something? So 1 2 3 we have received. If we do full join we will get null as well. ठीक है, you can check, we will get null as well. ठीक, simple as that. Right now we have received all those things. Take average point, this, that, and all. So what we have to do, write a query to find employees whose points are more than this. Okay, so let's write the employee name as well. Employee name. No, 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 don't do this. Simple, do one thing. Give that a city. ठीक है, simple, give that a city and join this table with the main table. ठीक है, I will write select everything from feedback table, join T1 on C dot cashier ID equal to T1 dot cashier ID. ठीक है, and we execute it. When we execute it, what we find out? Each and every cashier ID, see, like cashier ID 1 are having like this kind of scenario where average points are there here. ठीक है, simple as that. For cashier ID 2, average points for cashier ID 2. For cashier ID 3, average point is there. 5, average point is there. ठीक है, it is like that. Simple. Cashier ID and average points for that. 4 cashier IDs, 4 same average points. Right now we just have to do one thing. We just have to compare with the employee points and average points from this table. ठीक है, how to compare it? We will write having this is table C dot employee points greater than equal to
T1 डॉट एवरेज पॉइंट्स, ठीक है, सिंपल एज दैट। लेट्स एग्जीक्यूट इट। सेवन क्या हो गया यहाँ पे? कैशियर आईडी, ओके। कॉलम कैशियर आईडी मस्ट appear ग्रुप बाय, okay, why but c dot, so customer, I want customer name. It is better to write customer name, customer, but why customer name? That's what I'm trying to see. I have to write the employee name, right? EMP name, not customer name. It should be EMP name, right? Let's see. Do we face any error or do we get that? Oh, shit. Employee points also. Okay. एम्प्लॉय पॉइंट्स भी लिखना पड़ेगा। सी डॉट एम्प्लॉय पॉइंट्स एज वेल, ठीक है। तो फिर ग्रुप बाय में क्यों लिखूँ एम्प्लॉय पॉइंट्स? रिमूव दिस ग्रुप बाय, ये कोई एग्रीगेट फंक्शन नहीं है ना, तो वाई टू राइट दिस? T1 डॉट एवरेज पॉइंट्स, there is no aggregate function in this cashier id, group by cashier id. Oh, why I'm using this where? It should be where. Why I'm using this having? Up ठीक है। Right now we got the answer. Actually I was using having here, तो having is only used when aggregate functions are used, ठीक है। Having is only used when aggregate functions are used, ठीक है। Aggregate functions are used, ठीक। So we are done with question number 2. Any doubts? Anybody have? No doubts. Like Vishal, you were told कि कुछ issue हुआ है, क्या issue है? Anything, any issue? You have not written anything. Let me just refresh it. Let me refresh it. Okay, we have okay, we have 4 queries from Vishal right now. Linear regression, you are not replying, बात नहीं करना। Right now only I got your reply. Linear regression में क्या issue हो गया? What's the issue in linear regression? Linear regression में क्या issue है? What's the issue in that? मतलब क्या concepts में issue है या what? Like I mean to say theory या practical? मैथ्स में ज़्यादातर प्रैक्टिकल में इशू रहता है, जितना मुझे मालूम है। सो what is the issue in that, in linear regression? Is it theory or is it practical?
वी हैव वन मोर मैथमेटिकल फार्मूला में, और हाँ फार्मूला, राइट राइट। फार्मूला तो याद करने में तो बहुत इशू रहता है, मतलब लिटरली दिस डेरिवेटिव्स, कैलकुलस, लीनियर रिग्रेशन। फार्मूला से ही क्वेश्चन बनता है, और फार्मूला याद करने में इट्स रियली टफ, बिलीव मी, रियली टफ। लिख के याद करो, और एक ऑप्शन वही है भाई, लिखो 10-15 बार लिखो उसी फॉर्मूला को, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आई यूज्ड टू डू दैट, मैं एलजेब्रा में यही करता था। आई यूज्ड टू राइट फॉर्मूला 10 to 15 टाइम्स, वो याद रह जाता है एलजेब्रा में, फिर इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। उसमें कोई भी फॉर्मूला रहता है तो आई यूज्ड टू राइट अ लॉट, ठीक है, तो हो जाता था फिर। वही बस था अपना। और किसी को कुछ डाउट, और किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट लाइव स्ट्रीम में? एनीबॉडी एनी डाउट इन द लाइव स्ट्रीम? ओके, लाइक मैथमेटिकल फॉर्म, हाँ मैथ वही तो है लास्ट, हाउ टू फाइंड एम एंड बी। एम वही है ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, इज इट दैट? वही वाला पूछ रहे हो क्या? इज इट दैट वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी? यही है क्या स्लोप, जिसमें कि एम स्लोप रहता है? यही वाला फॉर्मूला है क्या? आर यू आस्किंग दैट कि और कुछ? रिप्लाई अगर बोलोगे तो आई कैन हेल्प यू आउट, मगर उतना आइडिया नहीं है, फॉर्मूला थोड़ा मोड़ा शायद आइडिया गलत हो सकता हूँ, बस जितना मुझे पता है आई नो, लाइक एम इक्वल टू स्लोप था, और बी कुछ था समथिंग, आइडिया नहीं बी का क्या मतलब है, बट एम का आई नो। एम का फॉर्मूला शायद कुछ है सिग्मा एक्स वाई इस टाइप से, मैं आइडिया नहीं है ऐसा, मतलब एनसीईआरटी में मैं पढ़ा था, इट वाज लाइक दैट, लाइक दैट। सिग्मा वाई फॉर्मूला याद है, बट मेरे को बी का मतलब नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बी। एम का पता है स्लोप है, बी का आई डोंट नो, नो आइडिया फॉर दैट। ठीक, इतना मुझे पता है इसका, एम का, बी का समथिंग, बी का मतलब पता नहीं, इफ यू वांट शायद फॉर्मूला समथिंग वाई बाय समथिंग एन करके है, आई डोंट नो कि क्या है उसका। एनकेसी, हाय एनकेसी वीडियोस, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। Welcome to live stream NKC videos. What are you explaining? No, I am not explaining anything. Just talking about this linear regression, slope, and I don't know what's the meaning of B. That's only I'm just writing the formula for slope and this B. Something M X like that. मेरे को याद नहीं यहाँ पे सिग्मा था कि नहीं, I also don't know. Like यहाँ पे सिग्मा था कि नहीं, that also I don't know. मैं भूल गया हूँ इसके बारे में। बी इक्वल
टू एग्जैक्टली, यस, बी इक्वल टू, ओके, बी इक्वल टू इंटरसेक्शन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बी इक्वल टू इंटरसेक्शन, करेक्ट। ये सब यूज होता है क्या ए आई एम एल में? ठीक, अगर आपको इसका मीनिंग भी चाहिए वो भी बता देता हूँ। मतलब एन क्या होता है? एन शायद नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होता है। एम इज व्हाट? नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद फिर सिग्मा एक्स, ये तो सम रहता है, सिंपल सम रहता है किसका? एक्स वैल्यूज का। ठीक है, सिग्मा वाई क्या रहता है? सम रहता है वाई वैल्यूज का। ठीक है, इतना याद है। उसके बाद और एक क्या क्या था? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, मतलब सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन। मतलब ईच ऑफ एक्स मतलब मल्टीप्लीकेशन रहेगा, मल्टीप्लीकेशन ईच ऑफ एक्स इंटू वाई, उसके बाद फिर ऐड, देन सम। ठीक है, इट इज दैट सिग्मा एक्स वाई का मतलब। और क्या था? और कुछ था क्या? अच्छा, एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ऑफ ऑल एक्स वैल्यू एंड देन एडिशन। इट इज लाइक स्क्वायर ऑफ जितने भी एक्स के वैल्यूज हैं उसका सबका स्क्वायर एंड सम, सिंपल। ठीक है, सर दिस इज द थिंग। इतना मेरे को याद है, पता नहीं कितना करेक्ट है कितना गलत है, दैट आई डोंट नो, बट जितना याद है आई कैन से दिस, दिस इज द थिंग। लीनियर रिग्रेशन मतलब जैसे एम और बी निकालने के लिए हम दो फॉर्मूला शायद यूज करते हैं, इसका स्लोप का। स्लोप में क्या बताता है कि लाइन का स्टीपनेस कितना है, वो स्लोप बताता है। और जो इंटरसेप्ट है, जो बी है, इंटरसेप्ट की इंटरसेक्शन ना क्या है, हाँ इंटरसेक्शन, जो बी वो बताता है कि लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, दैट्स द मीनिंग, लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, और एम क्या बोलता है? लाइन का स्टीपनेस कितना है। ठीक, दैट्स द थिंग। और बाकी एक्स एंड वाई तो यू नो, एक्स एंड वाई के सम्स निकालते हैं, उनको फॉर्मूला में पुट करो, फिर जो एम और बी दोनों आपको मिल जाएगा, क्योंकि एम और बी का दो अलग अलग फॉर्मूला है, इसीलिए एक्स एंड वाई के सम्स निकालो, पुट करो एंड जस्ट फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, मैं बता देता हूँ और एक बार, m का क्या वैल्यू है यहाँ। m का मतलब क्या है? m का मतलब ये है कि लाइन कितना स्टीप है। ठीक, लाइन का स्टीपनेस बताता है। और आपका b इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है ना, हाँ, इंटरसेक्शन क्या रहता है? ये बोलता है कि लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट का है, मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है, सिंपल स्टार्ट, वेट, लाइन स्टार्ट कहाँ से होता है? इट इज ऑल अबाउट लाइन स्टार्ट। ठीक है, सिंपल एज दैट, एम और बी। एम एल में यूज होता है, अरे बाबा, एम एल में ये सब अगर यूज हो रहा है तो भाई ऑल दी बेस्ट, क्योंकि ये सीरियसली इट्स वेरी टफ टॉपिक, लेट मी टेल यू। अभी इसीलिए याद है मेरे को क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, लेकिन क्वेश्चन दोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, कि क्वेश्चन का मेरा प्रैक्टिस ज़ीरो हो गया है। हाँ, लेकिन इतना है कि क्या है क्या नहीं है उतना मेरे को याद है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है, बट द फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला भी याद है, फॉर्मूला क्या है वो याद है, बट स्टिल नो, बी इज रिप्रेजेंट ऑफ डिस्टेंस, आई गेस बी का क्या है, लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है वो बी बोलता है, इतना मेरे को याद है, आई एम कंफर्म इन दैट। और एम का क्या है कि लाइन कितना स्टीप है वो एम बोलता है। अब ये दोनों चीज़ है एम और बी का। एम क्या है? लाइन का स्टीपनेस, और बी क्या है? लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, दैट्स द थिंग। एक बार क्रॉस चेक कर लो, वो एम बताता है स्टार्टिंग लाइन।
बी बोलता है लाइन का स्टार्टिंग, एक बार चेक करो तो, क्रॉस चेक। एम का मुझे मालूम है लाइन का स्टीपनेस बोलता है, मतलब इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट लाइन का स्टीपनेस, और बी का कि लाइन कहाँ से स्टार्ट करना है, दैट्स व्हाट बी रिप्रेजेंट, ठीक है, दैट्स द थिंग। सो ओके, अगर ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, तब तो फिर ए आई एम एल में तब भाई इज वेरी वेरी टफ, वेरी टफ भाई, क्योंकि इसका फॉर्मूला याद है, अगर इसका क्वेश्चन दे दोगे सॉल्व करने, भाई हाथ खड़े कर दूंगा मैं तो। दिस रियली, मतलब समथिंग वेरी मच, मतलब जो पहले से पढ़ा होगा 11th 12th उसके लिए ठीक है, इतना बता रहा हूँ, 11th 12th जो पहले से पढ़ा होगा उसके लिए ठीक है, मतलब जैसे मैं पढ़ा हूँ, मेरे को खाली याद है फॉर्मूला क्या है, मैं तो उतना भी अच्छे से नहीं पढ़ा था कि मेरे को अब क्वेश्चन दो मैं सॉल्व कर दूं, क्वेश्चन सॉल्व करना विथ यूजिंग दिस थिंग्स इज रियली अ बिग टास्क। फॉर्मूला याद है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट सॉल्विंग क्वेश्चन भाई, गट्स चाहिए भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बिकॉज दैट्स रियली समथिंग जिसमें प्रॉपर नॉलेज का ज़रूरत है। तो ओके, हम लोग का 1 आवर हो गया फॉर दिस क्वेश्चन, लाइक विच फाइल इज कॉमनली यूज टू इम्पोर्ट डेटा इन पावर बी आई। मैं लिखा था फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, एंड लोगों ने सही आंसर दिया, करेक्ट आंसर एक्सेल एस एक्स, मतलब एक्सेल फाइल। अभी का जो प्रोजेक्ट है उस पे हम लोग सी एस वी फाइल यूज़ किए, ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट अभी देखोगे यू विल फाइंड आउट कि मैंने सी एस वी फाइल का यूज़ किया है, और आने वाले प्रोजेक्ट में हम लोग एक्सेल फाइल का भी यूज़ करेंगे, ठीक, और डैक्स का भी यूज़ करेंगे। हालांकि अभी डैक्स का मैंने यूज़ किया नहीं है, हाँ मेंबर्स वाले वीडियो में आई हैव यूज डैक्स, मेंबर्स वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें आई हैव यूज्ड, तो मेंबर्स प्रोजेक्ट में डैक्स का यूज़ हुआ है, लेकिन जो नॉर्मल प्रोजेक्ट है फॉर एवरीवन उस पे बेसिक्स ही मैंने करा है। धीरे धीरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो जनवरी में जो प्रोजेक्ट आएगा उसमें हम लोग डैक्स यूज़ करेंगे, बेसिक्स वाले में ही, ठीक, वी विल यूज़ डैक्स देयर, ठीक है, वी विल यूज़ दैट थिंग। तो हम अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है, ओके, बाय दैट टाइम लेट मी जॉइन बैक इन जस्ट सम टाइम, ठीक है, जस्ट गिव मी 10 minutes, आई एम जॉइनिंग बैक अगेन, हैव टू फिल माई वाटर बॉटल, ठीक है, जस्ट गिव मी 10 minutes। ओके,
हेलो हेलो हेलो। एक लॉट्स ऑफ मैसेजेस। ए हाय जे, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। हाउ आर यू? आई एम गुड भाई, आई एम गुड। हाउ आर यू जे? हाउ आर यू? एक मिनट। सो एम इज अ वेट, कितना इनपुट कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है आउटपुट कॉलम। वेट? भाई वेट का मेरे को आइडिया नहीं है, मतलब उतना आइडिया नहीं है। क्वेश्चन रिलेटेड पूछोगे उतना आइडिया नहीं है, बट मे बी यू माइट बी करेक्ट बिकॉज आप पढ़ रहे हो तो यू माइट बी करेक्ट। बी इज नथिंग बट आईडी इनपुट कॉलम्स इज गॉन, तब बी कुछ वैल्यू रहेगा वाई में। ओके, आईडी नहीं, इफ। ओके, मैं फिर से पढ़ता हूँ। बी इज नथिंग बट इफ इनपुट कॉलम इज गॉन, तब भी कुछ वैल्यू रहेगा वाई में। ओके भाई, उतना आइडिया तो नहीं है, बट जितना फॉर्मूला और इसके बारे में आपने इतना पूछा, उतना तो आइडिया है तो बता दिया। बाकी क्वेश्चन रिलेटेड अगर पूछोगे तो भाई मेरे को खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कि मेरे को खुद आइडिया नहीं है इसके बारे में। दैट्स द थिंग, राइट। बट अच्छा है, चलो पढ़ रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा लगा, बहुत दिन बाद मैं देखा समथिंग मैथ्स से रिलेटेड एंड ऑल। समथिंग रिलेटेड टू मैथ्स बहुत दिन बाद देखा और सही लगा भाई, अच्छा लगा देख के। इट्स अ गुड थिंग। पढ़ो, कुछ अगर डाउट वगैरह हुआ तो देखते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पावर क्वेरी के बारे में। ठीक है, पावर क्वेरी के बारे में एक सवाल पूछते हैं लाइव स्ट्रीम में। एक पावर क्वेरी के बारे में पूछते हैं, व्हाट इज पावर क्वेरी मेनली यूज्ड फॉर। ठीक है, देखते हैं इसका सही आंसर है कि नहीं, क्योंकि ऐसे बना के रखा था क्वेश्चन पावर बीआई के लिए, मतलब पावर बीआई का भी ये चल रहा था ना अपना काम, तो इसीलिए मैं रखा था। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं फॉर दिस पावर क्वेरी। ओके, वी हैव 3 more क्वेरीज फ्रॉम विशाल। एक मिनट। टू हार्ड भाई फॉर मी। भाई 11th 12th अगर पढ़े होगे तो उतना नहीं है हार्ड, मतलब हार्ड तो है, नो डाउट। डिफिकल्ट तो है, डिफिकल्ट तो रहेगा भाई। ए आई एम एल ऐसे ही एक अपने आप में एक डिफिकल्ट चीज़ है ए आई एम एल। तो उसमें ये सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली दे विल बी टफ, क्योंकि इसका सैलरी बहुत सही रहता है, इतना ही बता रहा हूँ। सैलरी बहुत ज़्यादा रहता है इसका, जितना मुझे मालूम है। ठीक, जितना मुझे मालूम है इसका सैलरी बहुत सही रहता है। तो ओके, वी हैव 1 more क्वेरी, क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा। किस, अच्छा इसका बात कर रहे हो क्या, पावर क्वेरी, राइट। पावर क्वेरी का मेन यूज़ क्या रहता है? पावर क्वेरी में आपका मेन यूज़ रहता है डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का। डेटा क्लीनिंग और
मतलब जो डेटा है उसका ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत काम आता है। पावर क्वेरी का, ठीक है, दैट्स द थिंग, करेक्ट। नहीं पढ़ी मैंने, 11th में ही, 11th में ही ज़्यादा इसका है, 10th में तो उतना, 10th पे ज़्यादातर आपका देखना इस पे ज़्यादा फोकस रहता है 10th पे। अभी अभी पता नहीं अभी का क्या सिलेबस है। 10th पे जाता है ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, फिर आपका स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वही सब ज़्यादा। हाँ, जवाब दिया है भाई आपका क्वेश्चन का, राइट, हाँ सही है, करेक्ट है, करेक्ट है, दिस इज व्हाट आई टोल्ड। सही आंसर दिया आपने। आपने तो लाइव स्ट्रीम में भी करेक्ट आंसर दिया है। डेटा क्लीनिंग और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में ज़्यादा यूज़ होता है पावर क्वेरी, तो क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा, करेक्ट। मतलब आपका अगर एरर रहता है या तो टेबल मर्ज या तो स्प्लिट कॉलम चेंजिंग, मतलब डेटा टाइप वगैरह कुछ अगर चेंज वेंज करना हो तो पावर क्वेरी इज यूजफुल। ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी। अगर पढ़ूँ तो क्या क्या पढ़ूँ, आप बता सकते हो, लाइक फॉर 10th 11th 12th जब। भाई 10th 11th 12th में मतलब फॉर ए आई एम एल मेरे को जितना पता है यही सब है, आपका लीनियर रिग्रेशन वगैरह ही है, स्टैट्स प्रोबेबिलिटी यही सब ही है, शायद मेरे को उतना आइडिया नहीं है एम एल के लिए क्या मैथ्स का सही रहेगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो एम एल, ठीक है। तो एम एल के लिए इतना तो गारंटी दे रहा हूँ 11th 12th का सारा मैथ्स तो नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब 100% मैथ्स तो शायद नहीं चाहिए, इतना तो श्योर है। मे बी इसका 30-40% जो ओनली रिक्वायरमेंट है, उतना ही शायद आपको काम आएगा, आपके मतलब आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। दैट्स द थिंग। पूरा पढ़ोगे फिर लाइक इट विल बी टाइम टेकिंग, उससे बेटर है वही चैप्टर पढ़ो जो रिक्वायरमेंट है आपके एमएल के लिए, और वो चैप्टर पढ़ो जो मतलब सपोज एमएल के लिए जो मैथ्स रिक्वायरमेंट है, उसके साथ कुछ अगर और अदर थिंग्स रिक्वायरमेंट है मैथ्स के लिए तो वो पढ़ सकते हो, क्योंकि वो ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सारा चीज़ नहीं पढ़े, तीन चीज़, तो इसको शायद सॉल्व आउट नहीं कर पाओगे इस चीज़ को, क्योंकि एनी हाउ दिस थ्री थिंग्स आर कनेक्टेड टू दिस, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो इसीलिए अगर मतलब आई मीन टू से कि टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तो बेटर है कि जो रिक्वायर्ड टॉपिक्स है वही सब पढ़ो। क्या क्या रिक्वायर्ड टॉपिक्स है मेरे को तो कम ही आता है, आप लोग पढ़ रहे हो तो यू माइट बी हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, तो वही सब में आप थोड़ा ध्यान दो, इट वुड बी अ बेटर, और आई वुड से इट वुड बी अ स्मार्ट वे टू लर्न, ठीक है ना। सॉरी। तो किसी को कुछ डाउट लाइव स्ट्रीम में? चाय पी रहे हो या कॉफी? चाय पी रहा हूँ भाई, चाय पी रहा हूँ। अभी तो चाय पी रहा हूँ फिलहाल के लिए। एक मिनट, वन टू दिस, ओके, पोस्ट, थ्री एट 592।
हम्म, कुछ अगर मेंबरशिप्स। ओके, ऑल गुड। किसी को कुछ डाउट लाइव स्ट्रीम में पूछ सकते हो। Okay, we have one more query. Can you explain .mdf, .ldf and transactions mdf और ldf? ओके, ठीक है, पढ़ाते हैं। mdf क्या होता है मेनली? ठीक है, चलो ड्राइंग से अगर पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक ड्राइंग बना तो मे बी शायद आपको हेल्प आउट हो। सीक्वल सर्वर, देन मतलब नहीं छोड़ो, ड्राइंग का रहने दो। सिंपल में बता देता हूँ एक चीज़। एमडीएफ क्या होता है? प्राइमरी डेटा फाइल होता है विच इज मास्टर डेटा फाइल। एमडीएफ का फुल फॉर्म पहले लिख लेते हैं, ठीक है। एमडीएफ क्या होता है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज द मास्टर डेटा फाइल। इट इज द मास्टर डेटा फाइल, ठीक। एमडीएफ सिंपल। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। और एलडीएफ क्या होता है? लॉग फाइल होता है, आई थिंक सो, लॉग फाइल, ठीक है। एलडीएफ क्या होता है? जहाँ पे जैसे नाम है मास्टर डेटा फाइल, लेट मी राइट दिस। एमडीएफ में क्या होता है? एक्चुअल डेटा स्टोर होता है, एक्चुअल डेटा, ठीक है, बिकॉज दैट्स द मास्टर डेटा फाइल, ठीक है। दैट्स द मास्टर डेटा फाइल। और इसमें एक्चुअल डेटा स्टोर रहता है, ठीक है। एक्चुअल डेटा स्टोरेज। एक्चुअल डेटा मतलब जैसे आपका स्कीमाज वगैरह हो गया एंड ऑल, स्कीमाज वगैरह हो गया ये सब। बाकी आप उस दिन शायद पूछे थे स्टोर प्रोसीजर, वो सब भी इसमें रहता है, ठीक है। आई थिंक यू हैव आस्क्ड दैट द स्टोर प्रोसीजर्स क्या होता है एंड ऑल, ये सब इसी में ही रहता है, ठीक। एमडीएफ में स्कीमाज एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज इसका नाम जो सजेस्ट है मास्टर डेटा फाइल, सिंपल एज दैट। एंड इसका मेन काम क्या है? विदाउट दिस फाइल, एज पर द एग्जांपल आई एम सेइंग, विदाउट दिस फाइल डेटाबेस का कोई यूज नहीं है। विदाउट दिस फाइल नो यूज ऑफ डेटाबेस, नो यूज ऑफ डेटाबेस, ठीक है, सिंपल एज दैट। सेकेंड थिंग क्या लिखे थे हम लोग? एलडीएफ, लॉग फाइल। एलडीएफ क्या है? लॉग फाइल होता है, ठीक है। लॉग फाइल एज यू हैव टोल्ड, जितने भी आपके मतलब चेंजेस करने होते हैं, जैसे कि क्रिएट वगैरह हो गया, क्रिएट हो गया, फिर ड्रॉप हो गया, ये सब इसमें रहते हैं, ठीक है। और फिर अपडेट वगैरह हो गया, अपडेट, ठीक, ये सारे। मतलब अगर ये फाइल नहीं होगा ना, अगर डॉट एल डी एफ फाइल, इफ देर इज नो डॉट एल डी एफ फाइल और विदाउट दिस फाइल, व्हाट विल हैपन यू नो? सीक्वल सर्वर में कुछ रिकवरी नहीं हो पाएगा, मतलब नो रिकवरी पॉसिबल विदाउट दिस फाइल, नो रिकवरी पॉसिबल
from any of the SQL server, from any of the SQL server without this file. Simple as that. मतलब एवरीथिंग, एनी चेंजेस, या तो बोलते हैं ना DDL वगैरह, एनीथिंग, एनी चेंजेस हैपेंस इन द डेटाबेस बिकॉज ऑफ दिस LDF. ठीक है, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स, नथिंग. तो आई होप यू गॉट इट, यू गॉट इट. आई होप जे, लाइक यू, अब आपको समझ में आया जे, मतलब इजी वे में बता दिया, जस्ट नॉर्मल वे में बताया ताकि आपको समझ में आए. लाइक डू यू गेट इट, और डू यू हैव एनी डाउट्स, पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछना है. यू कैन आस्क, यू कैन आस्क. और एक भी बोल देता हूँ चीज़, अगर आप प्रोसेस पे जाओगे ना, प्रोसेस, कि सीक्वल प्रोसेस कैसे करता है, ये भी बता देता हूँ. सीक्वल प्रोसेस के टाइम पहले LDF का काम रहता है. ठीक है, मतलब LDF में पहले डेटा वर्क रहता है. देन देन MDF में दे अपडेट इट. MDF में दे अपडेट इट. ठीक है, जैसे आप सीक्वल में देखो, यहाँ पे पहले डेटा वर्क होगा, LDF में सारा काम इधर होगा, ऑल द वर्क रिलेटेड टू SQL, रिलेटेड टू SQL टेबल. ठीक है, देन इट विल गेट अपडेटेड इन द फाइल, जो कि एक्चुअल है फाइल अपना. सिंपल. ठीक. आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट जे. सो जे, इज इट क्लियर, कि कुछ और डाउट्स है तो पूछ सकते हो आप लोग. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द लाइव स्ट्रीम. If you still have any doubt in this, you can directly ask in the live stream. No worries for that. Right? Any doubt? Any doubt? Like जे आपको कुछ और समझना है तो you can ask. Sorry. अगर आपको समझना है, और then you can ask as well. No worries for that.
Like for this, ki suppose I can give you an example for update. For update, if you update employees, suppose you update an employee table, this employee table, okay, this one employee table and employee points, let take this. Suppose you update this feedback table or employee table, anything you want. I will take employee table so that you are not confused in that. Update employee table where what we have here, employee points, where employee points equal to 100. ठीक है, sorry, set employee point equal to 100, where what we have here, where id equal to 1. ठीक है, where suppose id equal to what we have, cashier id, suppose we write cashier id. Suppose where cashier id equal to 1. So in this what will happen, first जो points है, points change, मतलब whatever points you want to change, this one, this thing, this thing first goes to ldf. Why? Because you have written update. Then SQL will be like seeing ki ha chalo, it is the thing, these are the changes told by the user, and ldf will confirm it. ठीक है, ldf will confirm it and note it. ठीक है, that's the thing. In second step what happened, second steps what happened, SQL will see at the back end. ठीक है, SQL will see like there. Let me tell you one thing, when you create this update set and where SQL go rows by row. ठीक है, it will go row by row and it will see कि where id equal to 1, where id equal to 1, where id equal to 1. So in this, which is the second part, first you have written this SQL in SQL LDF, मतलब LDF file, log file. यहाँ पे SQL confirms it, everything is correct, note it down, then SQL start working. ठीक है, here SQL will go row by row wise and see if id equal to 1 or not. If it is there, then SQL server automatically changes the updates. ठीक है, so and when automatically changes the updates, it goes to mdf file and all done. So it is partially yes, I would say. It is better if it is an interview, it is better to say no and then give this example, this kind of example, and say ki yes it happens, but it happens partially. How it happens partially? Like this, wherever their id is 1, suppose in this table you go and see, in this table, from feedback table, in this table what will happen, SQL will go row by rows and see wherever the id is 1. So cashier id is 1 is there, automatically it will change the employee points to 100. ठीक है, then it will go automatically to different rows and then it will check if cashier id is 1 or not. So wherever cashier id is 1, automatically changes are done. ठीक है, automatic changes are done, this changes, automatic changes are done. So it is kind of partially yes, partially yes, mdf updates automatically. In near future if you add some more rows where id equal to 1 and then you run this query again, automatically it will update. That's what I'm trying to say. So it is partially yes, but 100% no, mdf does not update automatically, you have to update it
फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, दैट्स द थिंग। ठीक। आई होप यू अंडरस्टूड इट। मतलब इट इज पार्शियली यस, but I would say partially yes. I have given an example for that. That's what I'm trying to say. Okay, we have one more query from J Jones as well. J, क्या है इसमें डाउट क्या है? Actual data. We have actual data and we have updated data. ठीक है. We have actual data and we have update. Shit. Just a minute. Just wait for minute or two. Just wait for 2 minutes. Let me just confirm one thing. It's actually 8 o'clock. Just have to type 2 3 messages to my client and then I'm coming back. Okay, I'm coming back to your doubts. No worries for it.
हेलो 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 हेलो। ओके, आई एम बैक राइट नो, बैक फ्रॉम वर्क। ठीक है। वेर भी एक्चुअल डेटा एंड अपडेटेड डेटा, ठीक है। ठीक। एक्चुअल डेटा क्या होता है? सिंपल। हमने जो पहले पढ़ा था, जे एक्चुअल डेटा क्या होता है? एमडीएफ जो है वो एक्चुअल डेटा रहता है, ठीक है। अपडेटेड डेटा क्या होता है? अपडेटेड, लाइक, आर यू देयर, लाइक, लाइक, आई एम बैक इन लाइव स्ट्रीम। सो
on. Hello, hello. I hope, is it okay right now? I have just refreshed my OBS studio. Is it okay right now? अभी ठीक है? आज पता नहीं ऑडियो में इतना इश्यूज क्यों हो रहा है, बिकॉज आई डोंट नो. इज इट ओके राइट नाउ? अभी ठीक है क्या ऑडियो? जे लाइक, इज इट ओके राइट नाउ? क्या अभी ऑडियो ठीक है? इज इट ओके राइट नाउ? इज इट ओके राइट नाउ? अभी ठीक है क्या? अभी मैं रिफ्रेश किया, मतलब OBS स्टूडियो का, हैव रिफ्रेश्ड. इज इट ओके? हाँ, यस इट इज फिक्स्ड. ओके, मैं फिर से समझाता हूँ. एक्चुअल डेटा क्या होता है? एक्चुअल डेटा क्या होता है? डेटा विच इज एक्चुअली देयर इन MDF और परमानेंटली ऑन द डिस्क. ठीक है, दिस इज एक्चुअल डेटा. बट अपडेटेड डेटा क्या होता है? चेंजेस विच आर डन इन LDF, और यू कैन से चेंजेस विच आर डन इन टेम्पररी बेसिस, बट लेटर ऑन इट मूव्स टू एक्चुअल डेटा. ठीक. एनी हाउ, लास्ट में एक्चुअल डेटा में ही जाना पड़ता है. मतलब चेंजेस विच आर डन इन टेम्पररी बेसिस विद द यूज ऑफ LDF. ठीक है, देन लेटर it moves to actual data is called updated data. That's it, simple. ठीक. Suppose, let me give you an example, simple example. In schools, suppose in school, let me tell you a real story. Like when I was in class 8, a new class teacher came to my class. ठीक है, new class teacher. न्यू क्लास टीचर केम टू माई क्लास. तो उनके पास रजिस्टर नहीं था, अटेंडेंस रजिस्टर. ठीक है, शी वॉज नॉट हैविंग अटेंडेंस रजिस्टर. अटेंडेंस रजिस्टर. तो वो क्या करते हैं? शी यूज टू टेक, शी यूज टू, मतलब क्या बोलते हैं, शी यूज टू टेक द अटेंडेंस इन अ रफ नोटबुक. मतलब इन अ पेपर, नॉट रफ नोटबुक. शी यूज टू टेक अटेंडेंस इन रफ नोटबुक. सो this thing is called updated data. Just an example I am saying. This thing is called updated data. And when she received the attendance register after 2 days, and when she received the attendance register after 2 days, this updated data is being transferred to the final register, is being transferred to the final register, which becomes which becomes actual data. ठीक है, एक्चुअल डेटा, इट इज दैट. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. मतलब दिस इज एन एग्जांपल आई कैन गिव यू फ्रॉम रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब रियल में जब होता है, लाइक दिस इज हाउ थिंग्स वर्क आउट. एनी हाउ, एनीवेज, दिस अपडेटेड डेटा बिकम्स एक्चुअल डेटा एट सम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. ओके, लेटर व्हेन, ओ लेटर व्हेन, देखो बता रहा हूँ, देखो. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, first thing first, the moment you write a query, the moment you write a query in SQL, you write a query in SQL take updates from the SQL server
अपडेट्स फ्रॉम द SQL सर्वर एंड डू द वर्क, ठीक है। वंस द वर्क इज डन, checked, या you would say noted, SQL shift that data, SQL shift that data in MDF, or you can say actual data, ठीक है। It is like that, ठीक है। I hope you got it। मतलब जैसे कि आपने लिखा, सपोज सिंपल वे में, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा अपडेट वाला क्वेरी, कहाँ गया, अपडेट वाला क्वेरी यहाँ पे आपने लिखा, ठीक है। अपडेट वाला क्वेरी यहाँ पे आपने लिखा, तो सीक्वल मैंने क्या बोला था, सीक्वल पहले यहाँ पे रो बाय रो जाता है, ठीक है। सीक्वल गो रो बाय रोज, ठीक है, रोज बाय रोज। सो ये जो रोज बाय रोज जाता है और बैकग्राउंड में इट डू अ बैकग्राउंड चेक, और इट टेक the process to work on at that time, the data is in updated format। उस टाइम अपडेटेड डेटा के फॉर्म में रहता है डेटा। वंस एवरीथिंग इज डन, इट मूव्स टू एक्चुअल डेटा, ठीक है। इट इज लाइक दैट, एज आई हैव टोल्ड यू। जैसे कि आप यहाँ पे अपडेट लिखते हो ना, अपडेट सेट वेयर, जो आपने क्वेरी लिखा, सीक्वल क्या करता है, इट चेक्स एवरीथिंग। बैकएंड में सीक्वल इट चेक्स एवरीथिंग, गोज थ्रू दिस, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, सब कुछ देखता है, और रो बाय रो चेक करता है वेयर आईडी इक्वल टू 1। जैसे कि हमने क्या दिया था, वेयर कैशियर आईडी इक्वल टू 1, एम्प्लॉय पॉइंट्स 100 रखो। तो सीक्वल क्या करता है, हर आईडी में जाता है और चेक करता है आईडी 1 है कि नहीं। अगर आईडी 1 है तो एम्प्लॉय पॉइंट्स चेंज होता है, आईडी 2 है एम्प्लॉय पॉइंट्स चेंज नहीं होता है। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे वो अपडेट करता रहता है, चेक करता है, अपडेट करता है, चेक करता है, अपडेट करता है, देन चेक, देन अपडेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अपडेटेड डेटा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अपडेटेड डेटा, और द मोमेंट, आई वुड से इट इज बेटर टू से दैट मोमेंट इज कॉल्ड अपडेटेड डेटा, ठीक है। दैट मोमेंट इज कॉल्ड अपडेटेड डेटा। ये जो मोमेंट है उसको अपडेटेड डेटा बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, आपने क्या लिखा, जहाँ कैशियर आईडी 1 है वहाँ एम्प्लॉय पॉइंट्स आपको 100 करना है, ठीक है, दिस वन, दैट्स द थिंग। तो जैसे आप लिखते हो कि जहाँ आईडी 1 है वहाँ पे अपडेट करना है, वो हर जगह जाएगा, 1 जाएगा अपडेट करेगा, 1 अपडेट, फिर 1 फिर अपडेट, फिर 1 फिर अपडेट, फिर 2 नो वी वोंट अपडेट, फिर 2 वी वोंट अपडेट, लाइक दिस, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग अपडेटेड डेटा बोलते हैं, इस प्रोसेस को, ठीक है। और इसके बाद जो फाइनल आउटपुट आता है अपने पास, वो तो परमानेंटली डिस्क पे चले जाते हैं, सो दैट इज द एक्चुअल डेटा। When the data moves to actual data, thus the data removes from log file. Log file, I would say, if you uh, only, I think, अगर आप बैकअप ले लेते हो कि वेट, क्वेश्चन क्या था, व्हेन द डेटा मूव्स टू एक्चुअल डेटा, लेट मी जस्ट राइट इट, लेट मी अंडरस्टैंड इट, आई विल टेल यू अबाउट इट। व्हेन द डेटा, वेट, when the data moves to actual data, question, when the data moves to actual data, does the data get removed from log file? I think until and unless, I don't think it will.
Hmm, I don't think so. It will keep the no. I don't think so. Uh, I don't think so. It keeps the data in this. I mean to say, in the log file. I don't think so. It will keep the data. But let me think. No, no. I don't think so. No, no. मतलब MDF अपडेट होने के बाद लॉग फाइल से डेटा आई डोंट थिंक डिलीट होता है. आई डोंट थिंक सो. डिलीट नहीं होता. आई डोंट थिंक सो. मतलब एमडीएफ में जब आप अपडेट करते हो कुछ, एमडीएफ में जब आप अपडेट करते हो, मतलब उसके होने के बाद जो लॉग फाइल है उससे डेटा डिलीट नहीं होता है. मीन्स डेटा डू नॉट गेट डिलीटेड. डेटा डू नॉट गेट डिलीटेड. आई थिंक एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. जैसे एग्जांपल, आई मीन टू से, लेट्स टेक एन एग्जांपल. कैसे? जैसे आप लिख लो एग्जांपल, जैसे जीमेल का. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जीमेल. ठीक है. आपके पास मेल्स आता है. ठीक है. यू गेट मेल्स, ईमेल्स. ठीक. यू गेट ईमेल्स. ये ईमेल्स, सपोज आप समझ लो, लॉग्स में स्टोर रहता है. स्टेज इन द हिस्ट्री. ठीक. इवन इफ यू सेव देम समवेयर एल्स, जीमेल डज नॉट डिलीट देम. लेट मी टेल यू. ठीक है. अगर आप इस ईमेल को जैसे आर्काइव में वगैरह सेव करते हो, उसको डिलीट नहीं करता है यार. मतलब जीमेल डज नॉट डिलीट देम. इट, हाँ, नो डाउट इट गेट रिमूव्ड फ्रॉम योर मेन प्राइमरी. जो होता है ना प्राइमरी एरिया, वहां से तो रिमूव हो जाएगा. बट इट डू नॉट गेट रिमूव्ड. सो इट इज लाइक दैट. लॉग फाइल्स जो है, इट डू नॉट गेट रिमूव्ड. डेटा डू नॉट गेट डिलीटेड. Data do not get deleted. That's the thing. When data moves to actual data, डेटा रिमूव नहीं होता है लॉग फाइल से. ठीक. तो दैट्स द थिंग. मतलब आई इट इज बेटर टू से लाइक एमडीएफ अपडेट्स और इज नॉट इक्वल टू एलडीएफ डिलीट. या तो बेटर टू से एलडीएफ एम्प्टी. ठीक है. आई डोंट, इट डोंट गेट डिलीटेड. ठीक है. राइट. या तो और एक एग्जांपल देता हूँ. सेम एग्जांपल हम लोग चलते हैं. सपोज यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे जो ओल्ड वैल्यू है, जिनका 150 है. सपोज एम्प्लॉय आईडी टू का एम्प्लॉय पॉइंट्स 150 है. ठीक है. और ये कैशियर आईडी 1 है. कैशियर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ये सब. ठीक है. ये एम्प्लॉय नेम और ये एम्प्लॉय पॉइंट्स. ठीक है. आपने क्या लिखा? अपडेट क्वेरी लिखा, सेट एम्प्लॉय पॉइंट्स इक्वल टू 100 वेर कैशियर आईडी इक्वल टू 1. तो अब क्या होगा? लॉग फाइल में मार्क्स चेंज हो जाएगा. जो आपका यहाँ का जो भी मार्क्स है, मतलब पॉइंट्स है, जो भी पॉइंट्स है, वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम 150 टू 100. ठीक है.
it will change. Marks changes from 150 to 100, and after changing MDF में permanently it will change into 100. ठीक है, that's the thing. So once MDF is updated, and suppose you write like this, मतलब अगर आप वापस डेटा लेना चाहते हो, जैसे कि सीक्वल सर्वर में, द थिंग इज सीक्वल सर्वर में अगर आप डेटा देखोगे वापस, यू वोंट गेट दिस थिंग्स, ठीक है, इट इज ऑलरेडी चेंज टू दिस. बट लेट मी टेल यू, जो सीक्वल के डिस्क में रहता है, आई मीन टू से, जैसे अगर आप बैकअप लेते हो, आई मीन टू से दिस, once you take a backup of the log, backup log, suppose employee, employee table, backup log employee table to disk इक्वल टू TRN फाइल में, तो उसमें क्या रहता है, सीक्वल क्या करता है, ओल्ड एंट्रीज को रिमूव कर देता है, ओल्ड एंट्रीज को रिमूव कर देता है. अनटिल एंड अनलेस यू डोंट टेक द बैकअप इट वोंट गेट रिमूव्ड. एंड सीक्वल में आई डोंट थिंक backup you take for writing all this queries and all, finding all those answer. So until and unless you don't take the backup, it is still there in LDF file. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. मतलब जो ओल्ड एंट्रीज है वो रहता है until and unless you don't take the backup, and backup हमेशा तो नहीं लिया जाता, so that's the thing. तो MDF जब अपडेट रहता है, बैकअप्स आर स्टिल देयर इन द लॉग फाइल. ठीक. Rocky, hello, I am back. Hi, Rocky, welcome to live stream. I hope you got it, Jay. I hope you got it. So it is like MDF update is not equal to LDF empty. ठीक है. I hope you got the solution for it. I hope you got the answer. Okay, sir, it was helpful. Thank you for explaining everything. Okay, welcome, bhai. Welcome. So anybody have any doubt in this? Anybody have any additional doubts in this? I got it, sir. चलो बढ़िया भाई, बढ़िया. गुड वन. आई होप यू गॉट इट. ये इंटरव्यू में पूछा गया था क्या, व्हाट इज LDF, व्हाट इज MDF एंड ऑल?
सो लाइक दे हैव आस्क्ड इन द इंटरव्यू और व्हाट, मतलब ये वाला थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया था क्या इंटरव्यू में? एमडीएफ एंड एलडीएफ रिलेटेड क्वेश्चन? So any more doubt? Anybody have any more doubt in the live stream? I was studying about database and backup, so got to know about it. Okay, okay. तो आई होप यू गॉट इट कि इसका बैकअप रिलेटेड क्या यूज़ है एलडीएफ का एंड ऑल। आई होप यू गॉट द आंसर फॉर दिस। एलडीएफ का क्या यूज़ है एंड ऑल। एलडीएफ में ज़्यादातर बैकअप रिलेटेड काम इसी में ही रहता है, एलडीएफ में। दे कीप एवरीथिंग। मतलब जितने बार आप कुछ भी क्वेरीज लिखते हो ना, जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी करते हो, तो सीक्वल सब एक तरीके का रिकॉर्ड करता है। वाई यू नो, बिकॉज सपोज जैसे अभी 2-4 दिन पहले ये क्लाउड फ्लेयर का इशू हुआ था, तो उसमें जैसे अगर सिस्टम क्रैश व्रैश कर जाता है, डेटा इश्यूज होता है, तो सीक्वल यूजेस एलडीएफ टू रिकवर योर डेटा, एंड विदाउट एलडीएफ अगर कुछ काम होता, सपोज सीक्वल में अगर एलडीएफ नाम का कुछ होता नहीं, या बैकअप कुछ रहता नहीं, तो फिर इट वुड बी अ रियली इशू फॉर एवरीवन इन द डेटा वर्ल्ड। ठीक है। सो एलडीएफ इज ऑल अबाउट लाइफ सेविंग थिंग्स। ठीक है। वंस एवरीथिंग इज डन, इट मूव्स टू एमडीएफ, बट स्टिल एलडीएफ में डेटा रहता है ऑन अ बैकअप वे, until and unless you don't want to delete it। सब बैकअप रहता है बिकॉज ऑफ दिस, लाइक सर्वर क्रैश वगैरह, या तो सपोज सिस्टम में कुछ इशू हो जाता है। ऐसे सिस्टम इशू बहुत कम रहता है, बट स्टिल एलडीएफ इज ऑल अबाउट बैकअप। आई होप यू गॉट इट। अभी तो समझ में आ गया होगा, मतलब डेटाबेस और बैकअप के बारे में आप पढ़ रहे हो तो उसमें, राइट? आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन फॉर दैट। सिंपल वे में बोलो, एलडीएफ इज काइंड ऑफ अ कार्बन कॉपी ऑफ एमडीएफ। एलडीएफ क्या है? एक तरीके का कार्बन कॉपी, या तो बेटर टू से सेफ कॉपी ऑफ योर ऑल चेंजेस, ऑफ ऑल चेंजेस। ठीक है। सेफ कॉपी ऑफ ऑल चेंजेस रहता है। ठीक है, एलडीएफ। एंड एमडीएफ तो ऑब्वियसली द परमानेंट चेंजेस दैट डन।
in these things. ठीक है, I hope you got it. तो okay. So let's move to the next question of this. But still, anybody have any doubt, they can ask your doubts in the live stream. Yes sir, understood. चल बढ़िया भाई. If you have still any doubt, you can ask. कोई दिक्कत नहीं है. I will try to help you out. Let's move to question number 3. You have to write a query to find employees whose age is more than average age of all the employee. Oh baba. Age is average age. Do we have the age here? Let me check. Okay, we have age. तो इसमें क्या पूछा है एक बार चेक कर लेते हैं. लेट्स चेक दैट आउट. There was write a query to sorry, query to find employees whose age is more than average age of all the employee. मतलब whose age is more than average age of all the employee of all the employee. ठीक है, average age of all the employee. Simple. Average age of all the employee, just like we did for the first question. We did like average order. हम लोग जैसे average order placed for all the employees था ना. Same thing we did, we will do for here. We will use a subquery. We will use a subquery for this. ठीक है, subquery for what? Subquery for average of employee age. ठीक है, we will use the subquery and we will join it, or not join, we will use this subquery in the main query, and then we will compare the employee age, compare the employee age with average age. ठीक है, we will do that. Simple. So let's start in this. Okay, what we will do right now, we will write a query to find employees whose age is more than. Okay, first of all, let's find out the average age, then we will use that thing. Select from feedback table. Executed. Average age क्या है? 34.5. Oops. We will use this thing, this subquery in our main query. ठीक है, select everything asterisk, then this from feedback table, and let's execute it. Once we execute it, we have received the file here. What we have received? Average. ठीक है, total सबका average. ठीक,
Once we have received the file, right now what we will do, simple, we will be comparing with the employee age with the average age. ठीक है, मैं लिख देता हूँ as average age. अब हम लोग पे लिखेंगे where employee age greater than this. Let's see what we got in the output. We have received the output. Simple, we have used queries for what things we have used. We have used subquery and where. So what things we have used here? We have seen the use of subquery. We have seen the use of subquery, and also we have seen the use of where in arithmetic operators. Arithmetic operators, ठीक है. Simple, a normal subquery, then where का query you will use with the arithmetic operators. This is the operators, that's it, and we have found the output as well. ठीक है, simple. So anybody have any doubt right now for this, or should we move to the next question? Oops. Anybody have any doubt in the live stream? They can ask your doubts. Anybody have any doubt? In the live stream?
Anybody have any doubt in the live stream? They can ask your doubts. Any doubt related to anything like SQL or Python for data analytics, they can ask your doubts. Anybody have any doubt in the live stream? They can ask your doubts. Anybody have any doubts in the live stream? Anybody have any doubts in the live stream? They can ask your doubts. Anybody have any doubts in the live stream? They can ask your doubts. So किसी को कुछ भी डाउट हो लाइव स्ट्रीम में, दे कैन आस्क योर डाउट्स इन द लाइव स्ट्रीम. Okay, no worries. Let's move to question number 4. So what we have in question number 4? In question number 4, we have write a query to. Okay, wait. Yeah, write a query to display the let me see it here. Let me keep these things clear here. Yeah. Write a query to display the employee name, ठीक है, employee points, cashier ID of the employee with highest points under each cashier. Okay, so there are several cashier IDs. Suppose this is the cashier ID, ठीक है. Each and every cashier ID have a employee. तो employee 1, employee 2, suppose I write this, ठीक है. इस पर लिख देता हूँ employee 1 for cashier ID 1, employee 2, employee 3, and for cashier ID 2 we have employee 4, employee 5. Each and every cashier ID have
particular points on them. Suppose 10, 20, 15, 20, 12. And each of the cashier IDs have some employees who are having highest points. Like they have told, cashier ID of the employee with highest point under each cashier ID. So this is a matlab, what we say, this is a group of cashier ID 1, this group of cashier ID 2. And if I ask like what is the maximum points in this, you will say 20, and what is the minimum points in this, you will say 10. Same thing if I ask here for cashier ID 2, you will have maximum points 20 and minimum points as 12. Okay, so simple. You have to just find the maximum amount. Okay, that's it, nothing else, only the maximum amount. What we will do, simple, we will use the join wala matlab function. Then we will join it with the main table. Then we will join it with the main table with the comparison of cashier ID maximum points. Cashier ID maximum points, we will compare it. Then we will use operators where employee points equal to maximum of the equal to maximum points in that cashier. Maximum points in that cashier. Simple as that. We will do these things. Take, we will only follow these steps. Take, join with the main table cashier ID using of operators, find the output. How do we do it? Let's jump into the query. Simple, right? Select everything from feedback table, then select everything from cashier table. ठीक है? Okay, just a minute, guys, everyone, just a minute. Actually, I received a message from my client. Just wait for 2 minutes. I will just reply back to you in just 2 minutes. ठीक है?
So right now I have to go for a meeting with the client, and it might take around 1 or 1.5 hours for the meeting. So let's pause the live stream right now, right here, and then if the meeting is like around 30 minutes, then I will come back again in a new live stream. If not, then we will start tomorrow with the live stream. Take. So thank you everyone for joining the live stream, asking me doubts. Thank you for that. And let me give the correct answer for this. ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लेट्स मीट टुमारो अगेन इन द न्यू लाइव स्ट्रीम. ठीक है, बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर.